So now we are going to start the function. So function is what? Actually, the relation is only function. Suppose we have given a relation R from A to B. Okay, we have given a relation R. What is our topic now? Function. Okay, function. Now let R be a relation from A to B. R is the relation from A to B. Let from A to B be a relation. Then R is said to be function. R is said to be a function. R is said to be a function if every element has unique image. Okay, every element of A, if every element of A is has unique image in B. Image in, that is what. Suppose R is the relation such that one का image क्या है? Relation. ये x की वैल्यू होती है और दूसरा वाला y. तो वन जो है वो x है और टू जो है वो y है. वन का इमेज क्या हुआ? टू. Image of one is 2. One is 3, 4, 5, 3, 5, 7, 9. Suppose this is the relation. Okay? Is this relation is a function? So answer is no. This is not a function. Why? This is not a function because one has images and that images 2 and क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज वन का दो इमेज आ रहा है 2 and 3 and that's why this is not a function. But if we consider the same relation and write here 1, 2, 2, 4, 3, 5, 7, 8 or 7 times whatever you make. Like this, okay? So yes, obviously this relation is a function. Yes, this is a function. Why? Because every element of A has a unique image. If we write represent it by the ray diagram, you see this is set A and this is set B. So set A में कौन सा element है? 1, 2, 3, 7, 2, 4, 5, 8. Every element has unique image, and that's why this is a function. Okay, so that is, if we define a function, then we can say simply, function is nothing but a relation from A to B, for which every element of A has unique element in B. Means relation A to B function कहा जाएगा अगर हर एक एलिमेंट का एक unique image. Okay, so note it down. Then after we see. Then we can again define in other words a relation f from y is equals to fx. Y is equals to fx is said to be a function. Said to be a function
for each x belongs to x, there exists unique y belongs to y. Okay, y is equal to fx को फंक्शन बोलेंगे कहां से कहां, फंक्शन फ्रॉम x to y, for each x belongs to x, for every x there exists unique y, that means unique image of y in y, such that this is the function. Okay, और फंक्शन को और समझने के लिए कैसे समझेंगे, देखा जाएगा एवरी मशीन इज अ फंक्शन, है ना, सभी मशीन एक फंक्शन होते हैं क्योंकि फंक्शन पे ही मशीन काम करता है। आपके पास अगर कहीं देखो आटा वाली चक्की है तो वो भी एक मशीन है, वो भी एक फंक्शन, ठीक है। क्यों फंक्शन? क्योंकि वो भी तो आपको यूनिक इमेज दे रहा है। फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक तरफ आप इनपुट करते हो और दूसरी तरफ क्या होता है, आपका आउटपुट निकलता है। ओके, अगर गेहूं पीसने वाली मशीन में आप इनपुट डालोगे, ओके, गेहूं डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा, आटा मिलेगा ना। अगर चना डालोगे तो बेसन मिलेगा, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मशीन हैज गिव्स अ यूनिक थिंग, यूनिक इमेज। ओके, सो दिस इज फंक्शन। और सिंपली पहचानने के लिए अगर आपको सेट वाइज दिया तो आप देख लेंगे कोई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम ना हो, ठीक है। अगर हम ये एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल y is equal to fx, suppose y is equal to x plus 3, yes obviously this is the function y। अगर आप x की वैल्यू 1 रखो y को, x की वैल्यू 2 रखो y y, every element has a unique image। but अगर आपके पास यही y is equal to x, y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, this is not a function y। if you put x is equal to 4, y यानी x की वैल्यू को 4 रखा लेकिन y की यूनिक वैल्यू नहीं मिली, y की 2 वैल्यू। अंडरस्टूड? ओके, note it down। Function. Now again, if we talk about the domain and range of the function, okay, the same definition as we have given in relation. For the function also, domain of the function is subset of x. Suppose f from x to y be a function, f from x to y be a function, then f from x to y be a function, then subset of domain of f, subset of x, domain of y, range of y, sorry, range of f, this is subset of y, and codomain nothing but the whole set y. This is the domain and range of the function. Okay, what is real valued function? What is real valued function? Real valued function, नाम से पता चला real valued function। Okay, so if we talk about the real valued function, okay, nothing but whose ranges are, or range is real number, or we can say the subset of real number, the given function is called real valued function। Okay, and maybe from this onward, from this defined function, f from R to R, f from N to N, okay, these all are real valued functions. Why? Because their ranges is nothing but either real number or subset of real number. Okay, so this is a real valued function.
Okay, we are going to discuss the types of function. Okay, so in your book, the first function is what? The first types of function and their graphs. So first function is identity function. What is identity function? Identity function. What is identity function? Identity function. Okay. So identity function means a function f y is said to be identity function. A function f from x to y are, you can say, from real number, real value function r to r is said to be identity function if for each x belongs to r, f is equal to x. फंक्शन की वैल्यू वही f x इक्वल टू x आने लगे तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं. जैसे y is equal to x, y this is the identity function. Why? Because x की वैल्यू 1 रखो तो y भी 1, x2 रखो तो y भी 2, x3 रखो तो y भी 3, है ना. So this is the identity function, and from your book you see the graph of the identity function is nothing but a straight line passing through the origin. कहता है पहले एक straight line होता है जो कि origin से pass करता है. Okay, you see the graph of identity function. X is left, y dash. This is origin. Okay, हम आपको वन बाय वन फंक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको बुक से नोट कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में दिक्कत हो सकती है आपको, तो उसको देख के सही सही नोट करिएगा. Okay, now we are going to talk about the constant function. The same function, the same definition you can see. F from r to r is said to be a constant function for each x belongs to r. Fx is equals to what? K. For each x belongs to r, fx is equals to k, where k is what? K is a constant. K is constant. मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखो x का तो हमेशा क्या आता रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू. जैसे आपने पढ़ा होगा साइन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी अगर हम x y की वैल्यू ले लें, यानी x हम कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, x y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ये ही आएगी. तो इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन. Okay. Okay. Now next one is polynomial function. This is also very easy. Either quadratic. You may study in the class 10th. The graph of the quadratic equation is nothing but graph of quadratic polynomial is nothing but what? Parabola, है ना. क्यूबिक का होगा तो वो दूसरे अकॉर्डिंग बनेगा. लाइन का होगा स्ट्रेट लाइन होगा. So these are the polynomial function. This is generally represented by fx is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot like this plus an(x) to the power, and these are the polynomial function. Okay, and afterwards some more important function like modulus function, greatest integer function, okay, and signum function. So we will discuss it tomorrow because you have to learn the definition of the function. Okay, then after we shall discuss more about the types of the फंक्शन. पॉलिनोमियल के बाद आपका 2 ही 3 फंक्शन बच रहा बेटा. एक तो कौन सा बचेगा? सिग्नम फंक्शन. एंड आफ्टर सिग्नम फंक्शन विच वन इज द आफ्टर सिग्नम फंक्शन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस सब के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए हमको, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, नाउ if you have any doubt you can clear it here. Okay, सपोज करिए हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं fx is equals to x square. So how will you draw the graph? Okay, how will you draw the graph of the function? Maybe you know in previous classes, but I'm just going to define it. Suppose fx is equals to x square. This is the function. So how will you draw the graph? Okay, so this is nothing but x, y, x, x plus y, y. Okay, this is your Cartesian system. Any 2 or 3 value you have to take here. X is equals to x square, that means this is y is equals to x square. Okay? So x 0 to y क्या आएगा 0, x 1 to y 1, x 2 to y 4, x 3 to y 9. Okay, like this. So these are the coordinate of a point, like 0 0, 1 1, 2 4, 3 9. Okay? Coordinate you have to enter here. Surely you will get the graph like this. Okay? Graph by the free hand. You will get the graph like this. Because this is the parabolic graph. Okay? Similarly for cubic function, for any other function. Okay? We take a graph for the relation y is equals to x plus 5 है, उसको आप और भी बदल सकते हो. Suppose we have given a relation y is equals to r. This is like x y such that y is equals to x square plus 1. Okay, then for each x y belongs to natural number n, x is less than 3 something. Okay, so what is the relation? R is but x को 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 2. 1 2. If we put x is equal to 2, then y will be 5. So 2 comma 5. This is the relation which we depict in the roster form. So domain of R is what? 1 2 range. This is 2 5. And codomain is what? Natural number. Set of natural number. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे. Yes. Determine the domain and range of the function of the relation R defined by x, x plus 5, x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to x, x plus 5, like this.
relation R, determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to x, y such that x belongs to 0, 1, 2, and 5. Okay. 0, 1, 2, 3, 5, and then this. Okay. So find the domain and range of this function. X कहां तक हो सकता है बेटा? 0 से 5. Okay. So relation is what? 1, 0, 0 plus 5, 5. Okay. 1, 6, like this. Okay. This is the relation. कहां तक हो जाएगा? 2, 7. अब 2, 7 या 3, 8 की कंसिडर करना है कि नहीं, ये बात आती है. ओके. तो इसको कंसिडर करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सेट में नहीं दिया है कि सेट आपका कोई डिफाइंड है ना. Only you have given the value of x, and that's why you find the relation and domain range. Okay. 0 to 5 है तो आपको पूरा पूरा 5 तक कंसिडर करना पड़ेगा. उसके बाद देखना है कि सबसेट ऑफ ए, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या वो डोमेन है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है रेंज है. बिकॉज मे बी दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ रियल नंबर, है ना. दैट्स व्हाई ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन. ओके. ठीक है बेटा. तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हो. ओके. सो थैंक यू फॉर